Hello students, the question is two cells of EMFs E1 and E2 and respective internal resistances R1 and R2 are connected in parallel as shown in the figure. The effective EMF will be option 1 E1 R1 plus E2 R2 upon R1 plus R2, option 2 E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, option 3 E1 R2 minus E2 R1 upon R1 minus R2, and option 4 E1 R1 minus E2 R2 upon R1 plus R2. So the problem is based on the topic current electricity and in particular the combination of the cells. So this cell is having EMF of E1 and internal resistance R1 in series. This cell is having EMF E2 and R2 internal resistance in series, and we have to replace this parallel combination by a single cell, for example having equivalent EMF E equivalent and a resistance of R equivalent. Now in this particular problem it is asked only the effective EMF, that is E equivalent. R equivalent is not asked, but this thing we have to calculate. Now you can easily see that these are two parallel branches and in parallel the voltage is same. So for example, let us call this node as A and this node as B. So VAB, or we can say that it is V. So this is common for both the branches, and let us assume this current is I1 in this branch, this current is I2 in this branch, and the total current is I. Now if we replace this particular parallel combination, then also this current capital I flows into this particular cell, a single cell, the single equivalent cell. So this capital I remains same, the total current remains same, and we have to replace this combination by this combination, and the current and voltage relation must be same. For example, if this current is capital I and the voltage between A and B is V, then in the equivalent case also the voltage should be V. Now this V, basically the voltage across this particular series combination of E1 and R1, it can be written down as V equals to E1 minus I1 R1, E1 minus R1. Basically the direction of current is opposite to that which I have shown. This is the correct direction because this cell, this positive is here, so the current is in this direction from right to left, as well as in this particular branch also from right to left. This is the current, and when current enters a passive element, the current which enters the terminal is called as the positive terminal of the passive element, and the current which leaves the terminal of the passive element is known as the negative terminal. So this is positive, this is negative, and this is positive, this is negative. So in this way we can write this equation as E equals to E1 minus I1 R1. You can easily see that the voltage drop is I1 R1 but opposite to the E1. So it is E1 minus I1 R1. So let us call this as equation 1, or we can simplify in terms of current. So I1 current, this current becomes equal to V, this becomes E minus, this becomes E1 minus V upon R1. So this is the value of current I1. In a similar manner, for this branch we can calculate the current as I2 is equal to E2 minus V upon R1. Now the total current is capital I. So we can write down capital I equals to I1 plus I2, or we can say that it is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon, this is R2 basically, upon R2. Now separating the EMF and the potential terms, so we get this expression as E1 R1 plus E2 upon R2 minus V is common, 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is the expression. Now if we replace this combination by this combination, we can write the equation as V equals to E equivalent minus I into R equivalent, or we can say that the I current is equal to
equivalent minus, this is equivalent minus V upon R equivalent, or we can say that this I is equal to E equivalent upon R equivalent minus V upon R equivalent. So let us call this equation as equation 1. This is current, and this equation is equation 2. Now comparing these two equations, we can easily see that R equivalent, the value of R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is R equivalent. And this term is total equal to E equivalent upon R equivalent. Now writing this expression, so this is the value of I which we have calculated, and comparing these two values, we can see that R equivalent is equal to 1 upon R1 plus, basically 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, or we can say that R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2. This is the value of R equivalent, and equivalent upon R equivalent, equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. Now taking LCM R1 R2, so we get E1 R2 plus E2 R1 equivalent upon R equivalent. Now putting the value of R equivalent from this equation, let us call this as equation 3 here. So we get this expression as equivalent upon R1 R2, and here R1 plus R2 in the numerator it goes, and this is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. Now this R1 R2 cancels from both sides, and this R1 plus R2 goes in the right hand side in the denominator part. So we get this expression as equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So the expression second is correct, option second is correct here, E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So this is the correct choice. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दो सेल पैरेलल में दिए गए हैं, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं। सेल जो है उनके ईएमएफ E1 और E2 रेस्पेक्टिवली हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 रेस्पेक्टिवली हैं, और इनको रिप्लेस करना है एक सिंगल एक सेल से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक सिंगल वैल्यू शो की जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है जिसकी एक डेफिनेट ईएमएफ और उसकी डेफिनेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो। करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है, करंट जो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जा रही है वही करंट जब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे उसके थ्रू जानी चाहिए, और वोल्टेज जो पहले एग्जिस्ट करता था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वही वोल्टेज यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी टर्मिनल रिलेशनशिप मेंटेन रहनी चाहिए, तब ये हमें कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो रूल्स यूज़ करेंगे, बेसिक रूल्स कुछ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को I1 मान लेंगे, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ है तो बैटरी की करंट इस तरह से बाहर आएगी, इस बैटरी की करंट, इस सेल की करंट इस तरह से बाहर आएगी, राइट टू लेफ्ट मूव करेगी और टोटल करंट I मिलेगी हमें यहाँ। वोल्टेज को अगर V मानते हैं नॉन टर्मिनल के अक्रॉस, तो हम वोल्टेज के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं V इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से हमने I1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, I1 की वैल्यू हमने निकाली थी E1 माइनस V अपॉन R1, इसी तरह हमने I2 निकाली थी E2 माइनस V अपॉन R2। दो इक्वेशंस हमने लिखी थी, और उसके बाद हमने I बराबर रखा था I1 प्लस I2 और I1 I2 की वैल्यूज पुट कर दी थी, तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला था I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल एलिमेंट से, तब इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी V इक्वल्स टू इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसे रेशियो की फॉर्म में बना के लिख लेते हैं, E इक्विवेलेंट I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसी तरह से हम अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो ये टर्म है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये इसके बराबर होगा
आर इक्वलेंट की वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो उससे इक्वलेंट हमारा आता है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, जो ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट है. सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन. होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.